Hello, assalamu alaikum. I hope you guys are doing well today. Um, Conjunction so, but, because, although, इसमें एक ट्रिक होता है. अगर नंबर वन पे एक क्वेश्चन है, आई फेल डैश आई स्टडी. नंबर टू, आई पास डैश आई स्टडी. अगर इसमें एक होता है रिएक्शन. स्टडी क्या है यहाँ पे? स्टडी यहाँ पे एज एक्शन यूज़ हुआ है. उसका रिएक्शन क्या है? आई फेल. तो अगर रिएक्शन नेगेटिव हो तो उस केस में हमने ऑल दो यूज़ करना है. सेकंड एग्जांपल में आई पास डैश आई स्टडी. इस केस में रिएक्शन पॉजिटिव है, सो इस केस में हम बिकॉज यूज़ करते हैं. और एक्शन इस केस में क्या है? स्टडी है. नंबर थ्री, आई स्टडी डैश आई पास. अगर अगर रिएक्शन जो है, रिएक्शन पॉजिटिव हो तो उस केस में हमने इफ़ द एक्शन लीड्स टू अ पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है, इसमें एक्शन स्टडी है और इट लीड्स टू पास विच इज़ पॉजिटिव, so it means we have to use so. But if the action leads to a negative reaction, use but. For example, I study but I fail. इस केस में जो reaction है वो fail है, which is negative. So action study है. अगर action leads to positive reaction, so we use so. Action study है if it leads to negative reaction, so we use but. I hope you understand this lesson. Share it, like it, and thumbs up, and comment on it if you understand. Thank you.